Hello, ladies and gentlemen. So, welcome to our first ever episode of the Cricket Podcast. My name is Mani, and this is my partner Munir. And we're going to be talking about all things cricket. इस podcast पे हम हर क्रिकेट की चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें से अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, एशेज सीरीज, क्रिकेट वर्ल्ड कप, अपकमिंग क्वालिफायर्स और सारे इन डेप्थ एनालिसिस, डिस्कशंस, डिबेट्स, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो मुनीर भाई, कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे आप? यार, जो क्रिकेट अभी चल रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सीरीज चल रही है एशेज, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया इज 2-1-0. My apologies. They're Yeah. 1-0. They're going to be 2-0, of course. That's what my prediction is and how the scorecard plays its role. Okay. क्या लग रहा है, मतलब आप देख रहे हो, थोड़ा मैचेस देख रहे हो, स्कोर कार्ड्स देख रहे हो? बिल्कुल, मैचेस देख रहे हैं, जितना हो सके उतना देख रहे हैं। सही है। एशेज में बेसिकली ओके, लेट्स कंटिन्यू। कुछ नहीं। एशेज में मेन पॉइंट्स क्या, अभी तक के मेन पॉइंट्स क्या बोलोगे आप? क्या नजर यार, अभी तक के मेन पॉइंट्स are very clear. Joe Root scored his first 30th Test century on the first Test match, I believe. सही. Right. And then Steve Smith का था 32nd Test match, right? In terms of batting, आपको क्या लगता है? स्ट्राइक रेट्स की बात करना चाहिए। स्ट्राइक रेट में देखो, अब जैसे टू स्टार्क कॉन्ट्रास्ट्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में। अगर हम देखें तो एक तरफ उस्मान ख्वाजा का रियली स्लो स्ट्राइक रेट है, दूसरी तरफ हम देखें तो ट्रेविस स्कॉट जो है वो बहुत ही तेज रन करता है नीचे से आके, ऑलमोस्ट लाइक अ वन डे इंटरनेशनल जैसे काइंड ऑफ एन इनिंग। रन अ बॉल खेलता है वो, जैसे 90 on 90, 100 on 111, 110 इस तरह करता है, तेज रन्स करता है आके, जो कि टीम के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और नेसेसरी होते हैं, यूजफुल होते हैं और विनिंग कॉज के रन्स होते हैं। ओके, तो yeah. Okay, and then what do you, I mean, to be honest, I wanted to ask you this question earlier today. In terms of middle order, guys like Ben Stokes, and then you have guys like, we always, I mean, obviously spoke about Travis Head coming in and making such a big impact. As a captain, do you think that हमारे जो बेन स्टोक्स भाई है, आपको लगता है कि उसमें प्रेशर बहुत है क्योंकि एक मैच ऑलरेडी हार गए हैं, तो इसलिए रन नहीं बन रहा? या यार देखो, नेचुरली प्रेशर आ जाता है हारने के बाद, और ऑब्वियसली इंग्लैंड होस्ट भी है, तो उनके ऊपर जो है ना रिटेन करने का, और मतलब वही, जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन, प्रेशर उसके पास होगा, बट एट द सेम टाइम बेन स्टोक्स हम सबको पता है कि एक अमेजिंग कैप्टन है, अग्रेसिव कैप्टन है। लेकिन लास्ट मैच में अगर आप वही देखें कि उसकी जो अग्रेसिव कैप्टनसी थी बॉलिंग करते हुए, वो बाउंसर्स करा के जो है कैच आउट करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पैट कमिंस जो है उसने अपनी अच्छी बैटिंग से, और स्पेशल मेंशन टू नेथन लायन, जो कि बेचारा वो इंजर हो गए, लिम्प होके बाहर जा रहे थे, बट लास्ट मैच में उन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली। तो प्रेशर होगा, लेकिन आई फील लाइक वो इतना स्किलफुल कैप्टन है कि वो उस प्रेशर को ओवरकम कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है एक वर्ल्ड कप विनर है, तो उसके अंदर वो सारे बेसिकली स्किल्स हैं जो कि kind of take you back to his innings in Headingley जहाँ पे हुआ था। Okay, so that covers our middle order, I guess, when it comes to the match. So I have a question for you. Tell me. So ask away. What do you think about Labuschagne's current form right now? Yeah, Labuschagne is someone who he's very free of mind. वो उतना प्रेशर नहीं लेता जब भी आता है, जब भी खेलता है। I feel like he's well balanced. He's in a very right state of mind. एक दो शॉट्स वो खेल रहा है जो उसको नहीं खेलना चाहिए, सही है, जहाँ से मैंने उसको देखा हुआ है, सही है। और बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, और एनालिसिस आजकल डेटा और एनालिसिस इतना ज्यादा ऊपर हो गया है कि छोटी सी भी छोटी चीज कोचेस या बॉलिंग कोचेस पकड़ के एनालिसिस उनके साथ बैठ के इससे डिस्कस करते हैं कि अच्छा इसको कैसे आउट करना चाहिए, या स्टीव को कैसे आउट करना चाहिए, जो इज अ बिग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक स्टीव स्मिथ को कोई भी आउट कर सकता है। मतलब उसको आउट करने का प्लानिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो एक अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक है उसकी। But to go back to Labuschagne,
Listen, we've seen him before. We've seen him score huge, impactful scores. At the moment, I feel like he is going to make a good comeback, but it's just not his day. You know, हर क्रिकेटर का कोई एक दिन होता है. बिल्कुल सही बात और है. मुझे लगता है कि उसके एक दो इनिंग्स जो है उसका साथ नहीं दे रहा. But Labuschagne is Labuschagne, or that's true. That's true. He'll come back. He'll bounce back. Yeah. I don't see. जैसे आपने मेंशन किया कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो आई थिंक एक छोटा सा कंपैरिजन हम कर सकते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का, जो कि आई फील लाइक इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेटर बॉलिंग की है. पैट कमिंस और अपना नेथन लायन हो गया, पैट कमिंस हो गया, और जो दूसरे उनके बॉलर्स हैं. And I'll tell you the reason behind that. And I'll tell you guys the reason behind that as well. I'm sure most of you guys know there's a lot of knowledgeable good cricketers out there. हमसे ज़्यादा knowledge है. हमने तो अभी anyways. The reason behind that is because guys like Nathan Lyon, guys like Mitchell Stark, they don't go outside of their country to play. Right? IPL की बात, IPL की बात हम कर सकते हैं. Right? IPL की बात कर सकते हैं. Guys like Pat Cummins, Josh Hazelwood, these guys go and actually play international. They go and play domestic or even in leagues. Whereas, you know, Stark and Lyon, these guys, they were mentally preparing themselves for the Ashes, because for them, playing for Australia is playing for Australia. It's not playing for their name or the brand that they've created in IPL. So the workload is a lot less, I feel. Guys like, you know, even Ben Stokes, when he was in IPL just this year, he got injured and he was sitting outside for 90% of the matches. I think he may have just played only one or two matches. So this is a very like current popular debate, like IPL versus like Test cricket, right? Yeah. For me, obviously, Test cricket, for any like cricket fan that has been watching cricket since before the T20 format was invented, Test cricket is always going to be number one. Yeah. लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे इंडिया के सारे प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलते हैं दबा के. अब तो 2-3 महीने का टूर्नामेंट होता है, बहुत एक्सटेंडेड लंबा टूर्नामेंट होता है. तो उससे कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि भाई इट्स बिन 10 years, इंडिया अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाया अंडर विराट कोहली एंड अंडर रोहित शर्मा. धोनी ने तो सारी ट्रॉफी जिता दी थी, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये वो सब कुछ उसने जिता दिया था. एशिया मास्टरमाइंड, उसका धोनी की तो बात अलग है. we'll have to do a whole other that's another video. But जो मैं जिस पे आ रहा था वो ये था कि टेस्ट क्रिकेट वर्सेस द आईपीएल, तो मतलब इंडियन टीम को अगर एनालाइज किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को, ऑब्वियसली बायलैटरल्स में वनडे के किंग हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स हैं, T20 में भी डिसेंट हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2 दफा उन्होंने खेला है लगातार, दोनों दफा हारे हैं, लेकिन फाइनल में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है. डेफिनेटली. तो जैसे लाइक यू वर हिंटिंग एट द वर्कलोड, राइट? तो वर्कलोड की जैसे तुम बात कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि लाइक should modern players prioritize the financial aspects and play more leagues like IPL, or be someone like Stuart Broad and Anderson, जो कि सिर्फ जो है यही खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं? To be honest, I think ज़माना थोड़ा बदल रहा है. सही है, right? सही है. मुझे लगता है when we were young, or even guys like let's say हमारे जो elder brothers हैं, जो हमारे मामू लोग जो देखते थे, उस टाइम के टेस्ट मैचेस, उस टाइम पे क्या होता था कि any person that would think about their country, they would think about the test cap, or they would think about their cap playing for their country. For sure. Right? Because that was the one thing. और उस टाइम पे इतना सारा franchise leagues नहीं होते थे, उतने सारे पैसे नहीं मिलते थे players को. So I feel like right now that's the biggest problem is IPL बहुत सारा पैसे देता है अगर आप talented हो, और उसमें ही लोग खींच, like they just get pulled towards it. सही बात है. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्लेयर का हक है basically. Of course, 100%, especially in a time like this, right? I mean, if I'm going off the path here, which I'm not sure, but I was watching an interview today, or Vitality T20 का कोई interview था, जहाँ पे Josh Butler ऐसे कोई hint कर रहा था कि मैं शायद ना खेलूँ अब इंग्लैंड के लिए. सही है. मैं शायद इंग्लैंड टीम छोड़ दूं और सीधा बस मेन फोकस अपना आईपीएल पे रखूं. उसने ये नहीं बोला कि मैं आईपीएल पे रखूंगा, पर उसने ये बोला कि अभी थोड़ा टाइम ऐसा हो रहा है कि सब
they're going towards franchise leagues. Right. That's where the money is right now. That's where all the sponsors is, and everyone wants to, in one way, want to secure their future. For sure. Cricket is growing. I mean, we're in Canada right now. GT20 is starting. I think their third season right now. Yeah. And then US launched their Major League Cricket. And yeah, there's a lot of drama going on in Major League Cricket, but that's